So students, now we are going to discuss what is the first law of thermodynamics for isothermal process and adiabatic process. Now we are going to applying the first law of thermodynamics is mathematical equation for isothermal process and adiabatic process. So isothermal process means what? It is the process in which temperature remains constant. It's called as isothermal process, means delta T is equal to 0. As internal energy is temperature dependent, internal energy is also 0. Therefore, we can say that in isothermal process temperature remains constant and internal energy is temperature dependent, hence U is also constant. Means delta T is equal to 0 and delta U is equal to 0. Delta U 0 and delta T is equal to 0 because both the factors are correlated. Then you know the mathematical equation for first law of thermodynamics. Delta U is equal to Q plus W. Now here delta U is equal to 0. We are placing here 0 because it's an isothermal process. In isothermal process, temperature remains constant. Therefore, internal energy is constant. Delta U is equal to 0. 0 is equal to Q plus W. Means W is equal to Q comes left side, it becomes negative. W is equal to minus Q. So this is the mathematical equation for isothermal process, that W is equal to Q. It says that heat absorbed by the system is completely used for doing work on the surrounding. So W is positive. Work is done on the surrounding by the system. So W is equal to minus Q. So that is for isothermal process. Isothermal process का मतलब क्या रहता है? The process in which temperature remain constant. And as temperature and internal energy is correlated, temperature remain constant means U is also constant. Ultimately delta T 0 हो गया, इसका मतलब delta U भी क्या हो गया? 0. So temperature remain constant, hence U is also constant. Delta U is equal to 0, delta T is equal to 0. उसके बाद हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? डेल्टा U is equal to Q plus W. As this process is isothermal, delta T 0 और डेल्टा U क्या हो गया है? 0. वो वैल्यू प्लेस करेंगे, डेल्टा U 0 है, Q की जगह Q प्लस W की जगह W. ये प्लस W है और ये प्लस Q है. W यही रखा, हमने Q इधर लेके गए तो क्या हो गया? माइनस Q. W is equal to minus Q. इसका मतलब क्या हो गया? Work is done by the system on the surrounding. W is equal to minus Q. Heat absorbed by the system is completely used for doing work on the surrounding. So W is equal to minus Q or minus Q is equal to W. Meaning is same. Or Q is equal to minus W. Meaning is same. Clear? So this is for isothermal process. Now we are going for adiabatic process. Same condition. Mathematical equation for first law of thermodynamics for adiabatic process. What do you mean by adiabatic process? It is the process in which there is no exchange of heat with surrounding. That is called as adiabatic process. No heat is absorbed, no heat is released. So there is no exchange of heat between system and surrounding. So here no exchange of heat, that's why Q is equal to 0. We know the mathematical equation. The mathematical equation for first law of thermodynamics is delta U is equal to Q plus W. So Q is equal to 0. Delta U as it is, Q is equal to 0 because it's adiabatic process. W as it is. Clear? So इसके बाद 0 हम omit कर देंगे. Delta U is equal to W. So meaning is minus delta U is equal to minus W or delta U is equal to W. So this is the final equation you are getting, delta U is equal to W. So this indicates that there is an increase in internal energy of the system if work is done on it. Increase in internal energy, work is done on it. There is a decrease in internal energy, work is done on the surrounding. So meaning is same. जब हम adiabatic process का इक्वेशन डिराइव करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए, सबसे पहले हमको एडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन देखनी है. क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. Heat is neither absorbed nor released.
बिकॉज इट्स अ एडियाबेटिक प्रोसेस। इसका मतलब Q की वैल्यू क्या होगी? 0। Q इज इक्वल टू 0। हमने देखा मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। यहाँ पे Q 0 हो गया है, डेल्टा U इज इक्वल टू 0 प्लस W। इसका मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू W और माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाइंग दिस अबव इक्वेशन बाय नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या है? डेल्टा U पॉजिटिव है तो W भी पॉजिटिव है, डेल्टा U नेगेटिव है तो W भी क्या है? नेगेटिव है। डेल्टा U यानी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, work is done on it. So that is the mathematical expression of first law of thermodynamics for adiabatic process and for isothermal process. हम लोगों ने आज isothermal process और adiabatic process में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा है। इसका इतना सिंपल सॉल्यूशन है। isothermal process है, इसका मतलब क्या है? डेल्टा T 0 है, इसका मतलब डेल्टा U 0, बिकॉज इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर है डिपेंडेंट है। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी कम होगी टेम्परेचर कम होगा। इसीलिए डेल्टा T इज इक्वल टू 0 है तो डेल्टा U क्या हो गया? 0। मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। यहाँ पे 0 हो गया, Q प्लस W। सो Q इज इक्वल टू माइनस W और माइनस W इज इक्वल टू Q, मीनिंग इज सेम। हो गया? उसके बाद यही अपन अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या रहता है? नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसका मतलब Q इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। हो गया? मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 रख दिया। डेल्टा U इज इक्वल टू 0 प्लस W, डेल्टा U इज इक्वल टू W और माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू W। दैट इज द सिंपल वे सॉल्यूशन फॉर mathematical expression for first law of thermodynamics for isothermal process and adiabatic process. So this we will continue in the next video.